So what is the format? Title of the practice, objective of the practice, context of the practice, actual practice, evidence of success, problem encountered and resources required, and notes if you wanted to write. So relevant supporting documents of best practice will be required. So I will come back now. Now see, आप सब लोग देखो कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है. तो बेस्ट प्रैक्टिस ऐसे कुछ नहीं हो सकती कि मैंने आज सोचा और मैंने बेस्ट बोल के लिखा. That will not be the best practice. पहली चीज, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी जब आप पूरा 1 to 7 क्राइटेरिया का काम कंप्लीट कर लोगे ना, और आपको अगर लगा रिसर्च पब्लिकेशन फैकल्टी के इंक्रीज हो रहे हैं, दैट कैन बी बेस्ट प्रैक्टिस. आपको अगर लगा कि हमारे यहाँ के एडमिशन इंक्रीज हो रहे हैं, दैट कैन बी अ बेस्ट प्रैक्टिस. आपको अगर लगा कि मेरे को एनएसएस एक्टिविटी करने के बाद अवार्ड्स जो मिल रहे हैं वो अवार्ड्स हर साल में इंक्रीमेंटल है, तो दैट कैन बी अ बेस्ट प्रैक्टिस. यू कैन से आवर सोशल इम्पैक्ट इज इन अ सच अ वे दैट कि वी आर डूइंग द एक्टिविटीज एंड एजेंसीज आर रिकॉग्नाइजिंग अस, सो दैट इज बेस्ट प्रैक्टिस, राइट. देन मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस एब्रप्टली डिसाइड मत कीजिएगा. बेस्ट प्रैक्टिस आपके 7 क्राइटेरिया का काम पूरा हो जाने दीजिए. उसके बाद में जहां आपको पिछले 5 साल में इंक्रीमेंटल काउंट्स मिल रहे हैं, and your best practice. For example, scholarship given to the student by central state government is increasing in last 5 years. What you can say? Name of the practice: awareness related to state and central government practice. Outcome क्या है? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए. फिर प्रैक्टिस लिखिए कि हम यहाँ आके बच्चों को फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. देन एविडेंस ऑफ सक्सेस में आप क्या दिखाओगे? स्कॉलरशिप का अकाउंट जो बढ़ रहा है, राइट. मतलब आपको कुछ दिखाने के लिए लगेगा, और डॉक्यूमेंट्स यू हैव, दैट डॉक्यूमेंट यू कैन शो एट द टाइम ऑफ पीरियड इन विजिट, सो दैट आपको मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज मैं क्या देखता हूँ ना, कॉलेज वाले ग्रीन इनिशिएटिव्स आर बेस्ट प्रैक्टिस, राइट. So that cannot be best practice. That is routine work. Physical handicap resources can be a best practice. That is mandatory by UGC. You need to have ramp, rail, provision for assistance and everything like that. So that cannot be a best practice, right? So best practice can be a practice which can be shown or which can be proved with the evidence of success. That can be called as best practice, right? So work on your all 1 to 7 criteria. If your admission count is increasing, if your research publication of faculty increasing, whatever things which are going incremental in last 5 years, put that as your best practice. So everybody clear with this particular thing? मतलब ऐसा मत कीजिए 7वें क्राइटेरिया में लिखना है तो लिखिए, फिर बाद में सपोर्टिंग नहीं मिल रहा है. इससे अच्छा ऐसा कीजिए, पूरे 7 क्राइटेरिया का काम कर लीजिए, जिसमें जो चीज इंक्रीमेंटल जा रही है उसको बेस्ट प्रैक्टिस बोल के प्रेजेंट कीजिए. स्कॉलरशिप, एडमिशन, अगर ऐसा हो रहा है आपके यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट का काउंट इंक्रीज हो रहा है जहाँ कोई एजुकेशन कॉलेज चल रहा है, तो यू कैन से सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइडेड बाय आवर इंस्टीट्यूट आर इन सच अ वे दैट कि हमारा गर्ल्स का काउंट इंक्रीज हो रहा है. दैट मींस कि हमारे यहाँ इतने सही होने के कारण हम ये बेस्ट प्रैक्टिस बोल रहे हैं, राइट. जैसे वुमेन्स कॉलेज तो ये नहीं कर सकते, लेकिन जो कोई एजुकेशन वाला कॉलेज है वहाँ आप क्या कर सकते हो? यू कैन हैव एनालिसिस. See, if you have analysis of reserve category students, you can say कि scholarship schemes are imparted in such a way that कि हमारे यहाँ reserve category के बच्चे हर बार इतने परसेंटेज में आ रहे हैं. That can be your best practice. Means see, all 7 criteria you work on. In all 7 criteria where you feel counts are incremental, put that as your best practice. Clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Very nice. Very elaborately you have done. Now, like last point, that was like distinctiveness of the institution. So, in distinctiveness, what is the thing? Portray the performance of the institution one area which is distinctive to priority and trust within 1,000 words. So, guidelines for this is 1 activity or 2 activities which are unique at institute level. And see, in short, what we need to do, we need to write the description about the uniqueness of the institute from surrounding institutions, right? So, इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए आपके यहाँ ऐसा होता होगा कि हर टीचर 2 बच्चों को व्हाट वी से उनकी फीस पे करता होगा. दैट कैन बी योर यूनिकनेस. और आपके ऐसा होता होगा कि आपका मेंटरिंग सिस्टम है, जो फर्स्ट ईयर में बच्चों को मेंटर दिया जाता है, फाइनल ईयर तक वही मेंटर रहता है, राइट. सो दैट कैन बी अ बेस्ट प्रैक्टिस. सॉरी, दैट कैन बी अ डिस्टिंग्विश. मतलब ऐसी कौन सी भी चीज जो आपके यहाँ यूनिक है बाकी के कॉलेज के हिसाब से. जैसे अपना कॉलेज जालंधर में बेस है और अपने यहाँ कुछ तो ऐसी चीज है जो बाकी कॉलेज के पास नहीं है, लाइक मेरिटोरियस स्कॉलरशिप, like felicitation of toppers on Republic Day or Independence Day, something like that which is unique at our institute can be called as uniqueness, right? So मैं ये बोलना चाह रहा हूँ
इसके भी लिए क्या कीजिएगा कि थोड़ा एनालिसिस करके अच्छे से देखिएगा कि अपना लोगों से क्या अलग है, अपन लोगों से क्यों अलग बोले जाते हैं, अपन लोगों से किस चीज में अलग है, और वो डिस्टिंक्टिवनेस में पोर्ट्रे कीजिएगा। क्योंकि देखिए क्राइटेरिया 5 में 30 मार्क्स बेस्ट प्रैक्टिस, 20 मार्क डिस्टिंक्टिवनेस के हैं। अगर आप सही से लिख पाओ ना, ये मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं। And see, institute used to lag because they don't understand meaning of the question. मतलब क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस में वो लिखते हैं कि हमारा बॉटनिकल गार्डन इज बेस्ट प्रैक्टिस, बट आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए बॉटनिकल गार्डन लगता ही नहीं है, तो व्हाई इट कैन बी अ बेस्ट प्रैक्टिस। Rather than that, you can say value-added programs imparted for the student is uniqueness of our institute. Along with curriculum, what we do, we impart value-added program for 30 contact hours, which are out of syllabus. हमारे faculty उसको लेते हैं, और at the end of value-added program, we issue certificate to the students. That can be our uniqueness. Anything which we are doing for our stakeholders, yeah. बच्चों को फीस में आप इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी देते हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से मेंटेन करके रखते हो, दैट कैन बी योर यूनिकनेस। See, but students are from rural background and they cannot pay the fees at once, so we give them 3 installments, right? And this type of applications we maintain. मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कुछ भी चीज जो आपके यहाँ यूनिक है, दूसरी चीज जिसका डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी है, वो अपना यूनिकनेस बोलिए। नहीं तो लिखेंगे अपन बड़ी चीज कि 2 विलेज हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, और विलेज को जाने के बाद आपको पहचानने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, दैट कैन नॉट बी यूनिकनेस, राइट? मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो नैक वाले बोले चलो विलेज जाते हैं विलेज, और वहां जाने के बाद कोई पहचानना भी नहीं कि कौन है क्या है बोल के ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी लाइक डॉक्यूमेंट्री सपोर्टेड, इट शुड बी लाइक उनसे बात करके सही चीजें होनी चाहिए, राइट? So this was of 7 criteria. Now I will take your 10 minutes time. Whatever in last 7 days you have done, no, just I will summarize in my way, right? And someone is asking me to clear doubt about geotag photographs, that will be getting cleared in my this presentation, right? So ये 10 मिनट में आपका लूंगा, इसमें आपको ना एक वो नया जो प्रोसेस है उसके बारे में पूरा समराइज कर दूंगा, whatever we have studied from last 7 days, no, just I will summarize in 10 minutes, okay? Right, now see, just I am coming on conclusion. So here देखिए, first thing, which manual to use. So all of you, we have discussed about this. If we are running only UG program, we will use UG manual, and if we are running UG and PG program, we will use PG manual. मतलब जो लोग सिर्फ UG program रन करते हैं वो UG manual यूज करेंगे, और जो लोग UG plus PG program रन करते हैं वो PG manual यूज करेंगे। दूसरी चीज कि नैक के मैनुअल हमेशा अपडेट होते रहते हैं, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि एक बार आपने मैनुअल डाउनलोड कर लिया, वही यूज कर रहे हो, 6 महीने बाद देखा तो आपका किया वाला काम और मैनुअल मैच नहीं कर रहा है। सो प्लीज विजिट नैक वेबसाइट डेली एंड सी फॉर द चेंज इन मैनुअल और चेंज इन डेटा। तो अभी रिसेंटली एफएलटी कॉलेज का मैनुअल 1 मार्च 2021 को चेंज हुआ है, उसके बाद चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप ना वेबसाइट विजिट करते रहिएगा और देखते रहिएगा। Then 4 steps were there: IIQA, which is also called as LOI or pre-qualifier, SSR, DVV, peer visit. So in IIQA, document will reject like this is institution and that will not let you go above को फाइंड आपके यहाँ की प्रैक्टिस लिखनी है, बहुत कुछ So we can't hear you.
हेलो हाँ जी सर। Sir, हेलो we can hear you now, sir. from this slide is not like from this slide, Now it's okay, sir. but from this side I have also connection. Hello, can you hear now? Yeah. Welcome back. Okay, right. So what I'm saying, slide मेरा connection छूट गया था. From start, this. Okay. Please tell me in message box because I could not hear anyone. Whether I am audible? Yes, sir, you are perfectly fine. You're audible. Okay. Right. No issue then. See, just I will repeat for you because connection was last. Just I was saying that NAC has 4 steps: IIQA, SSR, DVV, and peer rating visit. In IIQA, basic documents we need to give. Then they will reject with certain queries if queries were there, like affiliation letter to be translated in English. Then second, your website is fully is not fully functional. Then third one is your RTI tab is not available on website, like that. Two queries were there, right? Then IIQ एक्सेप्टेंस के बाद 45 डेज में SSR QL के लिए NAC के पोर्टल पे ऐसी जगह होती है, उस जगह पे आपको डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना है, तो यहाँ वर्ड काउंट NAC दिखा देता है, तो उससे ज्यादा अपन आगे नहीं जा सकते, राइट? देन फॉर क्वांटिटेटिव वी हैव डेटा टेम्पलेट नीड टू बी पुट एंड काउंट्स नीड टू बी पुट. देन 93 points are there in UG where we need to work on, 96 points are there in PG where we need to work on. Then थर्ड स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, डीवीवी, राइट? तो देखिए यहाँ क्या होता है, आप आपका एसएसआर सबमिट कर दो. एसएसआर NAC will check that SSR for 15 days and to every point they will ask you certain queries. How? So see, we have said 6 programs are implementing CBCS and elective. So NAC is asking provide university later implementation of CBCS. So then the documents. So we have lost you. Sorry friends, so these are technical snacks that can't be helped. So Dr. Anchit will be joining us soon. So till then we will have to wait a little. टेक्निकल प्रॉब्लम.
Dr. Anchit, we have lost touch, sir. We can't hear you. Hello, ma'am. Whether internet is giving issue? Hello, Hello. ma'am. Whether internet is giving issue? Okay, so we can't really connect to Dr. Anchit. Uh, uh, I think instead of that, even though he's quite young to many of us, he's got quite comprehensive knowledge about his subject, and we hope to listen from him right now. But till then, friends, let's. A few of our friends, they have expressed their willingness to share their views about the FDP. Dr. Anita Haridas from Chinmaya Art Science College for Women, Kannur, Kerala. She wanted to say a few words about the FDP. Dr. Anita, can you hear me? Yeah, yes, ma'am. I can hear you, ma'am. Okay, but can you hear me? Yeah, I can hear you. Ma'am, Ca- am I audible? Perfect, perfect. You're perfectly fine. You're audible, ma'am. Should we wait for Dr. Anchit to join? Pardon, ma'am? The resource person will be joining now, no, ma'am? He will be joining, but right now we can't hear from him. So instead we plan to move a little bit, and I think there is some technical snag. Anita, you can I say a think, few words. You and ma'am, he can is just joining. conclude I it think he is immediately. joining now. Is he? Sir, please unmute your mic, sir. Actually, thing was that I'm getting automatically logged out. Right, no issue. So I will just wind up in 5 minutes. Right. जो बोलना चाह रहा हूँ ना वो बोल ही नहीं पा रहा हूँ. Now I'm audible. Anji sir, you are audible. Yeah. So what I'm saying that कि see DVV process is very important. Then यहाँ क्या होता है ना, जैसे देखिए कि आपको DVV में ऐसे पूछा गया कि आपने जो
criteria 1 to 7 are essential and others can be opted out. Then, for example, one institute has opted out this particular 28 marks, so their divided by count is 972. Instead of 1000, they got divided by 972. What is benefit of that? Because see, if it is getting divided by 1000, they will get 2.2. But as it is got divided by 972, this institute has got 2.28. So pointer will increase. So likewise, one example I am showing. One institute has got 2705. As 30 marks they have opted out, they got 2.79. That is B double plus. If they haven't opted, they will be on 2.70. That is B plus. So ऑप्ट आउट करना इंस्टीट्यूट के लिए फायदे वाला है और आप कीजिएगा. बहुत इंस्टीट्यूट का अप्रोच मैंने देखा है कि वो बोलते हैं सर ऑप्ट आउट करेंगे तो लोगों को पता चलेगा ये चीज हमारे पास नहीं है, हमने ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं रहता. नैक ने अगर फैसिलिटी दी है ना तो आप ऑप्ट आउट करिएगा, राइट. देन सेकंड इज स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, जहां 20 एमसीक्यू और 1 सब्जेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट के मेल पे भेजा जाएगा. 1 महीना ये चलता है और कम से कम 10% बच्चों ने ये देना चाहिए. तो यहाँ 2 एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ. एक है अनमॉनिटर्ड वे का, एक है मॉनिटर्ड वे का. अनमॉनिटर्ड वे में क्या होता है कि बच्चों को मेल आ गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बच्चे ने आंसर दे दिए तो 2.03 मार्क्स आ गए, मतलब 60 में से 30 ही मार्क आ गए. लेकिन एक कॉलेज, अपने कॉलेज जैसे अच्छा वाला कॉलेज था जहां कॉलेज बुलाया गया, वो समझाया गया कि आप 60 में 30 मार्क और स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के 60 मार्क आपके हाथ में है, ये 90 मार्क्स आपके हाथ में है. तो इस पे ज्यादा फोकस करके अच्छे लीजिएगा, क्योंकि नैक में क्या है, दूसरे पॉइंट्स पे जहां 0 आ रहा है, फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, वहां तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें अपने हाथ में है ना वहां अपन जरूर कुछ कर सकते हैं. ये है ग्रेडिंग सिस्टम नैक की, आप सबको पता ही है. ये है ग्रेडिंग का चार्ट. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांटेड टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू 3 थिंग्स. फर्स्ट, एवरीबॉडी, आई एम ऑडिबल? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट आई एम शेयरिंग नाउ. आई एम ऑडिबल? Yes, sir, you are. Yeah. So see, anything of faculty gets divided by, sorry, anything of student get divided by total number of student. For example, if in your institute 1500 students were there, out of that only your NSS unit is of 100. So what NAC software will do? 100 divided by 1500, that is 6.6. So you will get that much percentage of marks out of that. मतलब आपको ये चीज पे ध्यान देना है, काउंट्स कैसे बढ़ाया जा सकता है. आप अगर ऐसा बोलोगे कि सर हमारे यहाँ एसएस यूनिट 100 का है तो उन्होंने 100 से डिवाइड करना चाहिए, तो ऐसे होता नहीं है. नैक के सॉफ्टवेयर में एक बार डिवाइडेड बाय का काउंट लिया जाता है, जहां जहां स्टूडेंट वाली चीज आती है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से वो डिवाइड हो जाती है. तो आपको स्टूडेंट के काउंट को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में सोचना पड़ेगा. इसके बाद आप जब कुछ प्रोग्राम करो वहाँ 100 एनएसएस वाले ले ही लो और 200 बच्चे अलग से ले लो, उनको बोलो एक्सटेंशन एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर्स बोल के. तो ये वाली पहली चीज. दूसरी चीज, एनीथिंग ऑफ फैकल्टी गेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी. जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट अपने हाथ पकड़ के चलिए, 95 फैकल्टी है, फाइनेंशियल सपोर्ट अपन 10 फैकल्टी को दिए हैं. सो 10 डिवाइडेड बाय 95 ये आ गया 10.52. मतलब अगर 10 मार्क का है तो आपको 1 ही मार्क मिल रहा है. तो व्हाट आई वांटेड टू से हियर, that see that one faculty is getting multiple benefit, NAC will be counting him or her as a one only. मतलब मेरे को 2 बार फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो NAC मेरे को 1 ही पकड़ रहा है. आपको ये करना पड़ेगा, जितने फैकल्टी आपके यहाँ है उन सबको 1-1 बार दीजिएगा, तब कहीं जाके कंबाइंड कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ फैकल्टी की इतना आएगा, राइट. सो यू नीड टू थिंक ऑन दिस. एंड थर्ड वन, someone has asked for geotag photographs. So see, till 2021 geotag photographs are not required. Hereafter you need to have geotag photographs, and that app is available in your mobile, Android as well as Mac, called as geotagging photographs. So there it will display longitude, latitude and everything, right. So this is what I wanted to talk. Thank you all of you. Hope in spite of a lot of disturbances I could clear a few points related to NAC, right. If anyone has any doubts, please ask. I will try to give the answers. So we could find only one question that was about geotagging that you have already answered, I guess. Yeah. So ma'am, till 2021 normal photos will do. Hereafter you need to have that app, and hereafter whatever activity you do, that should be geotag. So actually that was a major issue with us because we didn't know how to do it. So that was quite good. Anybody else who has any questions? Please. I don't think so. There are many questions, sir. Right. Thanks. So before concluding, ma'am, just I will show one single last slide and I will conclude. Right.
So see, if you wanted to build quality system of your institute, no, you need to just focus on these 4 circles. What are these 4 circles? First thing, before conducting activity, what you should do. At the time of conducting activity, what you should do. After conducting activity, what you should do. And last one, how to wind up that particular activity. So before conducting activity, permission from higher authority, notice circular to the beneficiaries, invitation letter or communication with expert if he or she is from outside. Then, at the time of conducting activity, attendance, geotag photographs or videos, and feedback from the beneficiaries related to resource person. Then, after conducting activity, thank you letter, feedback from expert related to our hospitality institute, and if financial documents. If you have promised expert that we will give you this much remuneration, so you need to put that, right? It's a voucher you need to have. And at last, how to wind up the activity, detailed program report authenticated by program coordinator and head of institution. मतलब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ भी आप करना चाहो ना, इसको ना ये 4 साइकिल से आप ले जाओ, तब ना कौन सी भी एक्रेडिटिंग एजेंसी आने दीजिए, कुछ भी आने दीजिए, आपका एक डॉक्यूमेंट भी मिस नहीं कर पाएगा. अपन क्या करते हैं, वी डू 1 or 2 स्टेप्स, वी लीव 1 or 2 स्टेप्स. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 4 स्टेप अगर आप सही से करो ना, तो आप ना बहुत सही से कर पाओगे. पहली चीज, आपको अगर कुछ करना है, प्रिंसिपल मैम से परमिशन, फिर बच्चों के लिए है तो बच्चों के लिए नोटिस, बाहर से कोई अगर आ रहा है तो उसके लिए इनविटेशन लेटर. या हेलो, हाँ जी सर, जी मैम. we can. Yeah, so attendance, geotag photograph, activity, feedback, drafting activity, thank you letter, feedback of experts related to our hospital financial document. और प्रोग्राम को वाइंड अप कैसे करो, 2 पेज का डिटेल प्रोग्राम रिपोर्ट बना के, नेम ऑफ एक्टिविटी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एक्टिविटी, आउटकम ऑफ एक्टिविटी. उसके बाद में 2 पैराग्राफ में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, 4-5 फोटो लगाइएगा, नीचे लेफ्ट हैंड साइड को प्रोग्राम कोड टाइप, राइट हैंड साइड के पल. मतलब आप 4 से किसी भी एक्टिविटी को आपके गुजारोगे ना, तो आपको ना आपकी क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम बिल्ड करने में बहुत इजी चला जाएगा. राइट, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल एट लास्ट कि 4 स्टेप से आप जाइएगा हर चीज में, तो आपकी ना सिस्टम अपने आप बिल्ड होने लगेगी. और कैसे होता है ना कि जैसे मैं देखता हूँ बहुत कॉलेज में, जैसे एक बार मैक का पहला साइकिल हो गया तो दूसरे साइकिल के 5 साल कोई कुछ नहीं करता है, 5वें साल ही भाग दौड़ स्टार्ट करते रहे. तो मेरा ये बोलना रहता है कि व्हाट यू डू इफ पब्लिकेशन इज डन, गिव दैट पब्लिकेशन टू IQAC on that day itself. If any activity is done, give that report of activity to IQAC on xerox copy on that day only, so that your quality system will get built. Otherwise, after 5 years, financial documents from account section is very difficult to procure. Right, something photos from anyone that are very difficult to take. किसके फोन में थे, फिर वो बैकअप कहाँ रखा है, नहीं मिलते हैं. तो जैसे कुछ एक्टिविटी हो जाती है ना, शाम में IQAC के एक पीसी पे एक फोल्डर बना के वो सेव करिएगा, 4 फोटो, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह स्कैन करके तुरंत, तो आपको इजी जाएगा. क्योंकि नए फॉर्मेट में क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट्स पे ही काम है, सब डॉक्यूमेंट ही लोग देखने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स ही अपन कैसे करते हैं वो चेक करना है अपने को. राइट, दिस इज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू मैम. Thank you so much, sir. Thank you so much, Dr. Anchit. So even though you're younger to many of us in years, but I guess your expertise and your view and your knowledge is really comprehensive. Thank you. Thank you so much, sir, and thank you for taking out your time to share this point with us. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. And now moving on to Dr. Anita. So, Dr. Anita, I welcome you. To one and all joined here. Respected principal and Navdeep ma'am and the resource person Dr. Anchit and all the participants here. Thank you so much for this opportunity. She has consented and she has allowed me to give this feedback also. Thank you so much, ma'am. I think the institution has very well organized the program. One very, very important point to be noted here is all the 7 criteria are not put together in the minds of all the participants here. They have segregated it into 7 different days so that we can focus on one particular criteria, and all the participants could get clear idea about this particular NAT process.
And by 2022, I hope so, the NAC is becoming mandatory to all the institutions, and all the institutions must be accredited at least with a B grade. So this is a very good initiative, that recollecting the points of the NAC process and revising the manual as such, I should say. The all the key indicators, everything is getting updated by the NAC. So all these things have been very well clearly imparted to all the participants. And I could say one very important point here is the NAC process. Sometimes some of us being teachers, and we are all held up with heavy, I should say, hectic schedule. Preparing and at the same time teaching and monitoring the students, evaluating them, and then again going behind the students. And especially during this pandemic, all of us may be facing this as a very, very difficult task, because everything has to be done online. And but the online, I think the online has taught us how we can make a process a systematic one. Because before you start your session, everything has to be prepared and you imparted. So this might have given an idea like how we can systemize our task of imparting the knowledge. So this will help us surely in the NAC process also. And NAC, though it is a very tedious task for the teachers apart from their schedule, but I can assure you that this gives you a very, very nice exercise to make the institution and the individuals as a quality oriented personalities. So if the institution grows, obviously the individuals will also grow. And if the individuals grow, obviously the institution will also grow. So I hope all of you might have enjoyed the 7 days session, which was very, very well organized. And each resource person who were identified by the organizing team, they could give a very, very clear idea about how the NAC process is to be continued in the institution. Thank you, ma'am. Thank you so much for the opportunity. And I appreciate the organizing team, and I hope all the participants will say yes to my suggestions also. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. We have Dr. Ilyas Ahmed Patwega from Nehru Art Science and Commerce College, Hubli, Karnataka. He wanted to say a few words with us. Dr. Ilyas, are you there? So I don't think so he's there. And Dr. Suresh Prasad Sarangi from PS Degree College, Deogaon, Bolangir, Odisha. He wanted to give us feedback. Sir, are you there? Yeah. Hello, am I audible? Just a few words, sir. Actually, we are running short of time now. Yes. Am I audible? Yeah, madam. Am I audible? Hello? Yes, sir, you are audible. So please switch on your mic. Yes, am I audible? Yes. Hello? Yes, sir, you are audible, sir. But you have only 1 minute, sir. Yeah. So, all right, madam. Actually, it is a very nice program, starting from first day to last day. And really, I am very much thankful to you, madam, Principal Ma'am Navdeep Kaur, IQC Coordinator Navdeep Kaur, and our team. Very nice programs. It was arranged in a very beautiful way. So many important aspects like course curriculum, faculty development, student assessment, gender sensitivity. Everything has been clearly spoken, which is very much understandable to all of my colleagues who have attended these classes. And really, we are once again will request you to conduct many more programs in future also, so that we can be very much acquainted with regarding the NAC verifications and all other things. Thank you, madam, for giving me such an opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much.
So dear friends, I feel happy to share with you a brief overview of the FGP. So I'll try to be very, very brief. I won't take much of your time. So on day one, Dr. Ramachandram, he focused on teaching, learning and evaluation. And he explained the concepts related to the new NAC guidelines and laid emphasis on quality education. And he emphasized that quality education focuses on social, emotional, mental, physical development of each student, irrespective of gender or socio-economic status. So day two, Dr. Kulwinder Kaur from Hindu Kanya College, she was our resource person, and she laid stress on initiating a wide range of program options and courses that are in tune with emerging national and global trends and also relevant to local needs. So the third day, it was dedicated to Criterion Third, research, innovations and extension. Dr. Vani Dutt Sharma from Guru Nanak National College for Women, Nakoda, she emphasized that institution has the responsibility to enable faculty to undertake research projects useful to the society. So the institution also has a responsibility to provide facilities to promote a research culture. And day four, Dr. Neena Seth Pajni, Principal, Govindgarh Public College, Khanna, and she spoke on Criterion Fourth, that is infrastructure and learning resources, and she stressed on the need for the adequate and optimal use of facilities available in the institution. And she explained that NAC requires information on how every constituent of the institution benefits from these facilities. And day five was given to Criterion 5, that is student support and progression. The resource person, Dr. Parminder Kaur, Director, Lalpur Khalsa College of Education, Jalandhar, she emphasized on the importance of mentoring and providing guidance to the students in various aspects of education, thus facilitating the progression of students to a higher level of education and towards employment. And day 6, our resource person was Dr. Priya Darshi Jaruhar, Director, Guru Gobind Singh Educational Society, Technical Campus, Bokaro. And he spoke on governance, leadership and management. He emphasized on the point that effective functioning of an institution can be judged by the policies and practices it has evolved in matter of planning human resources, recruitment training, performance appraisal, financial management and the overall role of leadership. And today, that is day 7 of the FGP, we had Professor Anchit Narwatkar, founder and CEO of the BRICS of He was our resource person and he spoke quite engagingly on Criterion 7, that is institutional values and best practices. He rightly emphasized that in order to be relevant to the changing national and global context of the educational institution, we have to be responsive to the emerging challenges and pressing issues. So, this response is reflected in terms of the kinds of programs, activities and values that it incorporates, the institution incorporates within its regular functioning. So this was my brief report, and now I will invite our worthy principal, Dr. Navjot, to present vote of thanks. Thank you. Good afternoon, all of you. First of all, I applaud the diligent efforts of our college IQSC, Dr. Nadi, the coordinator of this FTP, Dr. Maninder Arora, Mrs. Gagandeep Kaur, Mrs. Chandan